Okay, now see. This is 7th question. This is JEE Advanced 2019 का क्वेश्चन है ये, और क्वेश्चन नंबर भी है, और क्वेश्चन नंबर है 17 क्वेश्चन है. ओके, पेपर 2 में. दिस इज 2019 क्वेश्चन. तो यहाँ पे देखो ओजोन एनालिसिस, रिजल्ट पे ओजोन एनालिसिस दिया. मैंने ऑलरेडी बताया आप लोगों को, इन एडवांस दे विल नॉट गिव द सिंगल कॉन्सेप्ट्स, दे विल क्लब विद अदर कॉन्सेप्ट. सी हियर ओजोन एनालिसिस, reduction, and what dehydration also there, concentrated H2O sulfur. So just simply do the reaction. Reductive ozone analysis, break it. ये break होगा, तो now you will get like this. So you will get now this is what? This is what? aldehyde, and here already carboxylic acid is there. Then after what? Sodium borohydride. Sodium borohydride reduces only aldehyde to alcohol. Now you will like this. This is become to alcohol OH. See, this is become to OH. Now here we have the what? Carboxylic acid. In presence of H plus, what? Dehydration will take place. Okay, dehydration will take place. Removal of alcohol will take place. Now your product is this one, lactone cyclic ester. So what is the answer? The right answer is C. Very simple. Okay, based on ozone analysis and reduction. Yes, make it fast. Okay, now see, this is question number 8. This question 2017 paper 2 JEE advanced question, and actually this is a very big question, and we don't have sufficient place to write the entire question. So I will give the this question on the screen. Here you can see the question on the screen. Okay, now I will read the question. This is 1 and 2. They are giving some information about P, R and Q and S. See, the question was the compound P and R. See, P and R upon ozonolysis produce Q and S respectively. The molecular formula of Q and S is C8H2O, C8H2O. And Q undergoes Cannizzaro reaction. See, Q undergoes Cannizzaro reaction, and here, but not Halophon reaction. See, Halophon reaction means it must be contain CH3 and C double bond O. Are you getting my point? And Cannizzaro reaction means that does not contain alpha hydrogen atom along with carbonyl group. Okay, Q undergoes Cannizzaro reaction but not Halophon reaction, and whereas S undergoes Halophon reaction but not Cannizzaro reaction. Okay, this is very important. See here, they are giving P on reductive ozone analysis, you are getting Q, and R on reductive ozone analysis, you are getting S, having the same formula C8, 8 carbon atoms, and Q undergoes Cannizzaro reaction but not Halophon reaction. It means it contains only aldehyde group. Okay, it means there is no CH3 to do the Halophon reaction. Okay, now see this one. S undergoes Halophon reaction but not Cannizzaro reaction. Halophon reaction means it must be contain CH3 group. So this is Halophon reaction. You can cut this. It is converted into Halophon. So S contains ketone group and Q contains aldehyde but does not have the alpha hydrogen. Here having the alpha hydrogen. That's why it gives Halophon reaction but not Cannizzaro reaction. This is gives Cannizzaro reaction, not Halophon. Now let's see. We have the 4 options. See the options. This is a multiple answer question. The options, option S in the bracket, options with suitable combination of P and R respectively is R. Option A, this one. Option B, this one. Option C and option D. See, very simple. First we have to eliminate the options. Okay, in the advance. So in the product, all are this is alkene. You have to find what? P and R. P and R. So here you Q and S must be contain 8 carbon atoms. See here. In this case, if you cut this molecule, so you are getting this is aldehyde. So how many carbon atoms? 1, and benzene is 6. 1 plus 1, 6, 7, 7 plus 1, 8 carbon atoms. Here also cut this one. See, 1, 2, and 6, 8 carbon atoms. There is a possibility 8 carbon is there. Let's see. Let's check the carbon atoms now.
Here cut this one. So this is aldehyde you are getting, aldehyde, and this is benzene. 7 plus 1 8. Yes. Here see, cut it. So here 1 2 plus 6. Total how many here? 8 possibilities there. Now I just cut it. So aldehyde group 1 2 and this is 6 8 carbon atoms. See here, cut it. This is ketone 1 2 and 6. 8 plus 1 9. So this is C. QS. S is, this is not, it having the 9 carbon atoms. 6 plus 2 8 8 plus. So this option is not correct answer. Okay, now see here. Cut this one. So 1 2 6 8 8 plus 1 9. So this option is also eliminated. Two options eliminated by using this formula. Okay, now see here. If you cut this molecule, you will get here. If you cut this molecule, suppose A option C. If you cut the A alkene CH3, now you are getting aldehyde. See, aldehyde. Yes, Cantor reaction possible, but not alloform reaction. Q is this one. See, cut this one. If you cut this one, you will get acidophenol. See here. C double bond O CH3. Here you are getting what? Carbonyl group, and this is the CH2. See, this is the S. It gives alloform reaction, but not Cantor reaction. A is right answer. Now here also same. See, aldehyde you are getting, but the CH3 position is different, but it doesn't matter what is the position of CH3 here. CH3, and you are getting aldehyde. Aldehyde gives Cantor reaction. Yes, Q is a possibility Cantor reaction, but not alloform. See here again acidoform you are getting. Acidoform you are getting. So in this option, see, both are acidoform, and see here you will the change of CH3, but this is gives alloform reaction, but not Cantor but not alloform. So answer A and B is the right answer. Understood? It's very simple, but question is very big. So first, this is the hint. What are the hint in this reaction? First, see, in the advanced reaction, in some questions they will give some hint. Here hint is what? Cantor reaction means aldehyde, and alloform reaction. Alloform not takes place means there is no CH3. Here what? Alloform reaction means CH3 C double bond O. It means Cantor reaction not takes place. And 8 carbon atoms to 8 carbon atoms. But in this question, having the 9 carbon atoms means there is a C and D नहीं हो सकता. क्यों? यहाँ पे 9 कार्बन एटम है. बचा हुआ दो ऑप्शन में भाई सभी में 8 कार्बन एटम. तब हम देखेंगे इसमें और कैंसर और एलोफॉर्म रिएक्शन में तब यह come to A और B. So answer right answer is A and B. Okay? Yes, write the solution. Okay, now see, that is 2015 JEE advanced question, that is paper 2 question number 29 in that paper. Our question serial is 9. You can see the question in the screen also. Okay, see, from 2009 to 2019 JEE advanced paper you can download. I will provide that link in the description. You can download from that description. Okay, I will provide the link. See, the following reaction, the product S is what? क्या होगा प्रोडक्ट? देखो यहाँ पे क्या दिया? ओजोन एंड जिंक एंड वाटर. क्या होगा बेटा यहाँ पर? दिस इज रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस होगा. देन उसके बाद ये किसके साथ रिएक्ट हुआ? अमोनिया एंड हीटिंग. चलो हम बात करते हैं कि पहले प्रोडक्ट क्या बनता है. तो रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस में हमें पता है कि डायरेक्टली वी हैव टू कट इट. सो आपका प्रोडक्ट बन गया लाइक दिस. हियर द CH3 इज हियर और यहाँ पे आपका आल्डिहाइड बन गया. यस, नाउ दिस इज आल्सो अगेन आल्डिहाइड एंड दिस इज योर R रिडक्टिव ओजोनोलाइसिस. सो आफ्टर क्या किया इसका? नाइट्रोजन के साथ अमोनिया के साथ रिएक्ट करवा रहा है, देन हीट. सो अमोनिया शोस न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन. सो यहाँ पे रिएक्ट होगा. नाउ देखो ऑक्सीजन और ये एक H दे देगा ऑक्सीजन को. नाउ यू विल गेट लाइक दिस CH3. नाउ यहाँ पे एक OH, देन हियर दिस इज NH इंस्टेड ऑफ NH3 NH2. देन यहाँ पे और एक आल्डिहाइड ग्रुप है
देखो यहाँ पे और एक आल्डिहाइड ग्रुप है यहाँ पर, तो यहाँ पे भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होगा। देन यार आपको मिलेगा, देखो ऐसा, यहाँ पर CH3 है, नाउ यहाँ पर OH, नाउ दिस इज NH ही रहेगा अभी, नाउ देखो एंड इट इज आल्सो OH। यार अभी इसको हमने क्या किया, हीट। सी हियर दिस इज रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, यहाँ पे एक हाइड्रोजन, एसिडिक हाइड्रोजन है क्योंकि ये बेंजीन के पास में है, ठीक है। तो नाउ क्या होगा, रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल 2 मोल्स माइनस 2H। सो व्हाट वुड बी द प्रोडक्ट हियर, C, यहाँ पे CH3 है, नाउ हियर डबल बॉन्ड यू आर गेटिंग, C डबल बॉन्ड एंड N एंड हियर आल्सो डबल बॉन्ड, C। तो ऑप्शन देखो, ऐसा कुछ नाइट्रोजन रिंग में होना चाहिए, रिंग में है इधर, ये बेंजीन है, लेकिन देखो CH3 का पोजीशन डिफरेंट है, यहाँ पे भी रिंग में नाइट्रोजन है, CH3 का पोजीशन देखो अलग है, तो यहाँ पे होना चाहिए विद रिस्पेक्ट टू नाइट्रोजन 1 2 3 4 5, सी यहाँ पे 1 2 3 4 5। तो लेकिन इस तरफ यहाँ पे क्या है, CH2 सेम, लेकिन यहाँ पे होना चाहिए 1 2 3 4 5, यहाँ पे होना चाहिए। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो देखो उसमें पोजीशन रिएक्टेंट में किधर है, तो यहाँ पे आपका नाइट्रोजन आ रहा है, तो देखो 1 2 3 4 5 इस तरफ, क्योंकि इसके नाइट्रोजन की तरफ होना चाहिए सेम रिएक्टेंट। तो आंसर इज A is the right answer. Here what, this is the position of CH3 in the example is change. यहाँ पे अलग-अलग पोजीशन पे, ये तो राइट पोजीशन, क्यों, इस पोजीशन पे कोई रिएक्शन नहीं हुआ तो इसका पोजीशन चेंज नहीं होगा, तो आपका आंसर इज दिस वन। दिस इज JEE Advanced 2015 पेपर 2 क्वेश्चन। समझ में आया? लिखो। Okay, now see, this is 10th question, 2013 JEE Advanced, that is P1, paper 1. The number of carboxylic acid groups in the product P. See, this is, they are given hydrolysis and heating and ozonolysis, and this is oxidative ozonolysis. See, first step is what? Hydrolysis. So if you do the hydrolysis of ester, so you will get carboxylic acid. First you will get what? Carboxylic acid, you will get C double bond O, C double bond O, and here double bond, and this is carboxylic acid. See, this is carboxylic acid. So they are asking what? Number of carboxylic acid groups. Okay, and again heating. So if you heat this compound, again removal of water molecule takes place. It means there is no change in the reactant. Again see, to confuse you, they given hydrolysis and heating. If there is no heating, that reaction will stop at carboxylic acid. Now see, आपको कंफ्यूज करने के लिए हाइड्रोलाइसिस दिया है यहाँ पे। अगर यहाँ पे हीटिंग नहीं है तो आपका 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप रहेगा यहाँ पर, हीटिंग दिया हुआ है, इसका मतलब वापस रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल टेक्स प्लेस, अगेन आपका एनहाइड्रेट बन गया। तो अब इसको क्या करना है भाई, ऑक्सीडेटिव ओजोनोलाइसिस H2O2, तो अभी क्या होगा, ब्रेक होगा, ये एल्डिहाइड है, दोनों क्या होगा, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। सो दिस इज एक्चुअली इंटीग्रल क्वेश्चन। सी हियर, दिस इज एनहाइड्रेट, ये भी एनहाइड्रेट है, नाउ हियर दिस इज कीटोन ग्रुप, नाउ सी हियर, अब यहाँ पे दोनों ब्रेक हुआ, दिस इज कार्बोक्सिलिक एसिड एंड हियर आल्सो कार्बोक्सिलिक एसिड। तो दिस इज इंटीजर क्वेश्चन। नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप कितना है इसमें, ओनली कितना है भाई, ओनली, आंसर इज इंटीजर क्वेश्चन, आंसर इज 2 ओनली, बिकॉज दिस इज एनहाइड्रेट, सो वही 2 कार्बोक्सिलिक एसिड। अगर यहाँ पे हीटिंग नहीं दिया हुआ, अगर हीटिंग होता तो कार्बोक्सिलिक एसिड 0, क्योंकि ये भी रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल चला जाता, देन एनहाइड्रेट, तो नंबर ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड इज 0, बट यहाँ पे हीटिंग नहीं दिया हुआ है, तो इसलिए इसका आंसर है 2। अगर यहाँ पे हीटिंग नहीं दिया होगा तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड, ये भी कार्बोक्सिलिक एसिड, तो आंसर वुड बी 4 विदाउट हीटिंग। तो आंसर क्या हो सकता है, 4 कब, विदाउट हीटिंग। जब इसको हीट नहीं कर, अगर हीट नहीं दिया रहेगा यहाँ पे, तब इसका आंसर 4 होगा। तो नॉर्मली अकॉर्डिंग टू इसका 2013 JEE एडवांस से आंसर इज 2। ओके, राइट ऑन। Okay, now see the next question.
ठीक है. Now if we do the intramolecular, यहाँ पे आपका aldehyde ग्रुप है. Now this is ketone. हाँ, तो ऐसे लिख सकते हैं. ये कीटोन ये CH3 है and H. इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजनेशन और हीटिंग, तो क्या होगा? रिमूवल ऑफ वाटर मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस. तो यहाँ से यार ऐसा लिख देते हैं, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन लिख देते हैं, यहाँ पे 1 हाइड्रोजन. So these 2 hydrogens are combined with this oxygen. Removal of water molecule will take place. Now you will get here C. This is okay. 1 minute. So this is your carbonyl group. Then after what you are getting? Once this is a CH. Now you are getting what? Double bond. And this is CH2. This is the final product. Okay. Now आपका स्ट्रक्चर ऐसा कुछ है इसमें. Now let's see here. This one. अगर आपको यहाँ पे, now this is aldehyde. So CH3 carbonyl group. Your answer is B. So this is a very difficult question. और पता नहीं इसने सॉल्व किया होगा नहीं होगा 2009 में. Okay, this is very excellent question. And only hint is what? Haloform reaction. Based on haloform reaction, we determine this P and Q. Hope so you understood all JEE advanced problem based on ozonolysis and some side reaction. Okay. See, we completed complete ozonolysis and mechanism of ozonolysis and their exceptional cases and JEE means NEET problem and advanced problems. यार बहुत मेहनत करके बनाए सारे क्वेश्चंस. तो आपको क्या करना होगा अभी? So please you have to do one thing, that is what? Please subscribe my YouTube channel SK Chemistry Academy. If you like my lectures, please share my lectures to your friends and support me on YouTube and subscribe my YouTube channel SK Chemistry Academy. Okay? तो नेक्स्ट और एक दमदार वीडियो के साथ मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में. ओके, तब तक बाय.